Not every day goes as planned. आज कुछ ऐसा ही दिन था. Today had 3 different lessons packed into one session. A technical failure, a confidence issue and a FOMO entry. Let's break it all down. Today is Thursday 7th of May 2026 Nifty non-expiry session. And from the very opening it was a tricky day. Nifty opened positive above previous day high, but that strength didn't last long. Within the first 5 minutes, market started falling. And that falling move is where I took my first trade. The setup was clear. Nifty opened above previous day high but started showing weakness. So I decided to take a call sell trade to ride that downside move in 24,350 CE. My intended entry was around 210 with a target of around 170. A clean setup with defined risk reward. But then my laptop hanged, charts gone, platform frozen. By the time everything restarted, my trade had already entered, but at 170, which was exactly my target price. So, essentially, I entered the trade at the level where I was supposed to exit. No room for profit, risk reward completely gone. Since my laptop was still recovering, I managed this trade entirely on mobile and somehow still closed it with a profit of around 200. Given the situation, 200 was honestly a decent outcome. The setup was right, but something completely outside my control affected the execution. After this, I restarted my laptop and waited for things to stabilize before looking at the next trade. Market was now trying to break above previous day high. It is a key level. अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है. A bullish candle was forming and looking at that candle itself, I entered the trade. And that was the mistake. The correct approach should have been waiting for the candle to close above previous day high and then entering only when the high of that candle is broken. That is a confirmed breakout. But instead I entered while the candle was still forming, before the breakout was even confirmed. And when that candle finally closed, it was a doji. A doji means indecision. Buyers tried to push higher, sellers pushed back equally, and neither side won. So instead of a clean breakout, market was showing hesitation at a given level. Seeing that doji, I lost confidence in the trade and exited with a loss of 980 rupees. But here's the thing, exiting was also a mistake because the very next candle was a strong bullish candle and market moved up. जो ट्रेड लॉस में था वो एक्चुअली प्रॉफिट में आ सकता था अगर मैंने थोड़ा पेशेंस रखा होता. ये देखना ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था और यहाँ से फोमो किक इन कर गया. Seeing the market move in my direction after I had just exited, I re-entered the trade. But this time I was not entering on a fresh setup, I was entering because I didn't want to miss the move. And that is never a good reason to enter a trade. What happened next is what usually happens with FOMO entries. The move turned out to be a fake breakout at previous day high. Market reversed and my stop loss got hit. जो ट्रेड पहले थोड़ा लॉस दे रहा था, वो अब एक बड़ा लॉस बन गया. And if I think about it honestly, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हार्डवेयर फेलियर की वजह से पहला ट्रेड मिस हुआ. उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने ट्रेड 2 में प्रीमेच्योर एंट्री ली. फिर कॉन्फिडेंस नहीं था तो जल्दी एग्जिट की और फिर फोमो में वापस एंट्री कर गई. फ्रस्ट्रेशन ने फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया. कहते हैं ना, लॉस होने से ज़्यादा दर्द मूव मिस करने पे आता है. आज एग्जैक्टली यही हुआ. फर्स्ट ट्रेड मिस हुआ इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके और 2 ट्रेड ले लिए जो और फ्रस्ट्रेशन दे गया. Well, anyways, after this my rule of maximum 3 trades per day was done. This rule exists exactly for situation like today, to stop me from overtrading when things aren't going well. And honestly, it was the right call to stop. Market was making huge volatile moves throughout the day and continuing to trade in that environment would likely have made things worse. So I closed my terminal and called it a day. Overall 2700 का लॉस हुआ आज के दिन. तो आज का दिन लॉस में गया. बट ऑनेस्टली आज के 3 ट्रेड्स में 3 अलग अलग लेसन्स थे. पहला लेसन, टेक्निकल फेलियर्स हैपन. लैपटॉप हैंग होना, प्लेटफॉर्म फ्रीज होना, ये चीज़ें कभी भी हो सकती है. द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज हाउ यू रिएक्ट. आज मैंने मोबाइल पे मैनुअली एग्जिट करके डैमेज कंट्रोल किया और गिवन द सिचुएशन 200 प्रॉफिट वाज एक्चुअली फाइन. दूसरा लेसन, एंट्री ओनली आफ्टर कंफर्मेशन. अगर मैंने प्रीवियस डे हाई पे कैंडल क्लोज होने का वेट किया होता तो आज लॉस नहीं होता. प्रीमेच्योर एंट्री ने ना सिर्फ एक लॉस दिया बल्कि कॉन्फिडेंस भी तोड़ा और फोमो का रास्ता भी खोला. तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, फोमो. FOMO re-entry is the one of the most common mistakes traders make.
And today I fell into exactly that trap. Seeing a move happen without me, I panicked and re-entered. But that entry had no fresh logic behind it. It was purely emotional, and emotional entries almost always lead to losses. एक चीज जो आज सही रही, मैंने अपना 3 ट्रेड्स रूल फॉलो किया। वोलेटाइल मार्केट में रुक जाना और ज्यादा ट्रेड्स ना लेना, ये अपने आप में एक अच्छा डिसीजन था। तो ओवरऑल आज एक लॉस डे था, बट हर लॉस डे कुछ ना कुछ सिखाता है। आज के 3 लेसन्स, टेक्निकल बैकअप, एंट्री कंफर्मेशन और फोमो कंट्रोल, ये सब लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। लेट्स सी व्हाट टुमारो ब्रिंग्स। अगर आप भी कभी फोमो एंट्री या प्रीमेच्योर एंट्री फेस करते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वुड लव टू नो हाउ यू हैंडल इट, because at the end of the day this channel is all about learning and improving together. अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, फील फ्री टू लाइक द वीडियो। और अगर आपको ये रियल ट्रेड ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स improve our trading one step at a time. Thank you and have a nice day.